Assalamu alaikum, this is Maria Abid from the platform of 101 Incredible Women CEOs of Pakistan. Today, we have the privilege to introduce our esteemed guest, Dr. Sara Qureshi. She is the co-founder and CEO of Aero Engine Craft Private Limited. Let's delve into conversation with and find out how did she started. Assalamu alaikum. वालेकुम Welcome to 101. थैंक यू कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपकी इतनी यूनिक सी फील्ड है। अभी भी अगर हम बचपन में बच्चों के बचपन में जब उनसे पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनना है, तो बहुत से बच्चे अभी भी कहते हैं कि पायलट बनना है, जहाज़ों से खेलते हैं, उड़ने का शौक़ है। आपने ये कंपनी अपनी कैसे स्टार्ट की? अपना ये करियर आपने कैसे सोचा कि मुझे यही करना है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ये एक शुरू से एक पैशन होता है और वही फिर आगे जाके किसी रियलाइजेशन में तब्दील होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही था। आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन इस्लामाबाद एंड शुरू से शौक़ था साइंस का, और क्योंकि पेरेंट्स भी साइंटिस्ट थे तो एनवायरनमेंट भी था, इनकरेजमेंट भी थी। और तभी से मैंने एक क्योंकि मेरा फोकस बहुत ज़्यादा था तो एक फ़ोकस बनाया कि आई वांट टू डू दिस बड़े होके, और फिर उसी हिसाब से अपनी एजुकेशन ली। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की EME कॉलेज नास से पहले। वहाँ भी आई वाज द ओनली गर्ल इन माय क्लास, क्योंकि वो मैकेनिकल के फील्ड्स में एक तो वैसे ही लड़कियाँ कम आती हैं, इंजीनियरिंग में ही कम आती हैं, और फिर वहाँ पे उस ज़माने में लड़कियों को एडमिशन नहीं दिया जाता था। So I insisted that I wanted to do this, and then after that I worked in the industry for some time in the automotive industry, in factories. I enrolled in a flying school, took my private pilot license at the Lahore Flying Club while I was working, and then I got a scholarship for UK to do my master's in aerospace dynamics, which is the study of planes. वहाँ पे मैंने drones के auto pilots पे काम किया। और meanwhile वहाँ पे जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, Cranfield University, it was the hub of aerospace. So they had their own airport, they had their own aircraft, and because I already had a flying license, so I made use of that and learned further. तो मैंने वहाँ पे aerobatic flying जो होती है, flying the plane upside down, वो सीखी, साथ अपना मास्टर्स किया। Then I came back and I got married, and then I got another scholarship for my PhD. So then I went back for my PhD, और PhD start की वहाँ पे environment friendly aircraft engines पे, aerospace propulsion में, which is the study of airplane engines, what we call jet engines. And then I was given this research on making planes environment friendly. उनकी जो smoke पीछे से है उसको ख़त्म करना. It's like a new design जिसमें वो smoke जिसको हम contrails कहते हैं वो ना हो, because उससे pollution फैल रही है, उससे global warming हो रही है. So I started working on that. मेरी बेटी पैदा हुई. I had to move back to Pakistan and continue my work here. I started working with my father. My father was also a scientist, and he tried to help me because obviously I was away from my university and also caring for a baby. So then he came up with these inventions, which is like an add-on to a jet engine जो कि उसकी emissions को ख़त्म करता है. तो एक वो world wide एक उस पर patents हमें मिले. फिर मैं वापस गई, मैंने अपनी PhD ख़त्म की, और फिर मेरी यूनिवर्सिटी ने कहा कि दिस इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट, एंड ये तो एक पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ सकती है इस एविएशन इंडस्ट्री में, इस काम के साथ और इस प्रोजेक्ट के साथ. ये तो आपकी काफ़ी बहुत it's a huge achievement. It's a huge achievement, true. So then they said that you should continue this because PhD में तो आप थोड़ा theoretically उसका डिज़ाइन और ये सब चीज़ें करते हैं, बट उसको एक्चुअली इस लेवल का बनाना कि वो कमर्शियली प्लेन्स के ऊपर फिट हो सके और इस्तेमाल में लाया जा सके. सो उसके लिए फिर आई हैड सम ऑप्शंस कि मैं यूके में ही रह के कंपनी स्टार्ट करूँ, या लेकिन आई केम बैक टू पाकिस्तान and I started this company in 2018 with my father. We were two co-founders,
एंड वी स्टार्टेड कि हम इसको बिल्डअप करें और ये दुनिया के लिए एक इन्वेंशन होगी। इसी दौरान फिर हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स थी एयरक्राफ्ट इंजन्स की, तो इनिशियली हमने कोशिश की कि हम वो कहीं से ले लें, बट देन वी रियलाइज कि पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी कोई नहीं बना रहा और अवेलेबल भी नहीं है, तो हमने एक ख़ुद से जेट इंजन यानी जो जहाज़ों का इंजन होता है वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा कमर्शियली बनाया। अच्छा, सो दैट वाज अनदर माइलस्टोन that's great. एंड देन वी मेड द प्रोटोटाइप, लाइक जो हमारी इन्वेंशन है उसका एक छोटे साइज़ पे, छोटे पैमाने पे एक मॉडल बनाया, मॉडल कह लें या उस मशीनरी को डेवलप किया, जो कि अभी अब टेस्टिंग फेज़ में वो डेवलप हो गया। हमारा जेट इंजन अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप हो गया, वो भी अब टेस्टिंग फेज़ में है। मतलब ये माइलस्टोन्स हमने अचीव किए। उसके बाद हमने एक और पैटेंट लिखा, एक और इन्वेंशन की सुपरसोनिक प्लेन्स पे, जो कि दुनिया में जो बहुत फास्ट ट्रैवल है, जो कि सिर्फ अभी मिलिट्री में होता है और अभी तक दुनिया में एक सुपरसोनिक प्लेन कॉन्कॉर्ड के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि ग्राउंड हो गया था हाँ, वो बहुत पुराना, बहुत पहले हुआ था। पहले था। और उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि इट्स अ वेरी नॉइजी प्लेन, मतलब वो नॉइज़ रेगुलेशंस को नहीं मीट कर सकता, बिकॉज अगर तो मिलिट्री की आप बात करते हैं तो मिलिट्री का तो ये होता है ना कि वन ऑफ है, वंस इन अ वाइल एक प्लेन फ्लाई करता है, लेकिन कमर्शियली तो एवरी 1 मिनट अ प्लेन इज टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग। लेकिन अब जो जिस एरा से हम गुजर रहे हैं इसमें फास्ट टाइम जो है वो बहुत श्रिंक होता जा रहा है। देयर इज़ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर टाइम, so people are wanting fast travel and they want to be very connected. So उसके लिए हमने फिर एक लो नॉइज सुपरसोनिक इंजन इन्वेंट किया, जो कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट को फॉर ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कैटर करेगा। उसको भी हमने पैटेंट है हमारा यूएस में, यूके में इंटरनेशनली पैटेंटेड है, एंड inshallah one day I will also develop. So that was the third milestone, and now I'm just trying to as you mentioned that I've presented my work internationally. I presented at Boeing in the US and Seattle. उनका जो core factory Collaboration आपकी उनके साथ? जी, उनके साथ हमारा कुछ initiate हुआ है, and then also in China, in Germany, in UAE. So the last year I've been traveling and presenting my work all over the world. Or inshallah now we are looking for the next phase of this project where we would be, because we've made the successfully made a jet engine in Pakistan. We've successfully patented a supersonic engine. We've successfully prototyped the contrail-free engine, जो environment friendly engines है, on a smaller scale, and now all these things are, it's under testing, and I want to wrap up this phase. बीच में कुछ setbacks भी हुए, obviously COVID threw everybody back by a few years, and also that उसकी वजह से कुछ illness and all, it came to every family. And then my father passed away in 2022. So after almost 6 months or more of illness, and so obviously ये challenges भी आए हैं, but alhamdulillah इसमें तो आपको बहुत बड़ा challenge लगा होगा, क्योंकि हमेशा you had your father's support with you. जी बिल्कुल, because he was obviously I cannot match his experience. वो एक बहुत बड़े scientist थे इस मुल्क के. He had a lot of contribution, a lot of achievements, a lot of experience, but obviously वो तो नहीं हो सकता. And then there's a workload. He was the CTO, I was the CEO. So now after his death I have to take both roles as the CTO and CEO, but I'm trying inshallah in the next phase. I continued. I didn't want to and I think that he would also want this work to reach its its ultimate success. So
Alhamdulillah, we made progress. We struggled, we made progress, and inshallah by mid this year I plan to wrap up this phase, and then I'm looking for like a minimum of $1 million of investment to move into the next phase, जिसमें एक तो हमारा विजन ये है कि हम इसको जो हमारा इको फ्रेंडली इंजन है जो कि ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री के लिए इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, इसको हम एक्चुअल स्केल पे बिल्ड करें, जैसे जो बड़े जहाज जिनमें आप फ्लाई करके यू ट्रैवल पैसेंजर क्रॉस पैसेंजर प्लेन्स होते हैं, उसके ऊपर फिट करें, उसको ट्राई करें और देन इट गेट्स इनटू commercial business. And the second is that we want to set up a production facility in Pakistan for making engines, like even smaller engines, but अगर हम एक बना लेते हैं तो it's like a breakthrough. अभी हमारे पास पाकिस्तान में कोई और ऐसी कंपनी है जो जेट इंजन्स या नहीं, आपकी इंजन्स नहीं बना रहा कोई भी, even other than your company? No, even motorbike engines भी कोई नहीं बना रहा, let alone aeroplane engines. So this is what I want to achieve for this country. I want this breakthrough. Okay, we should stand in that league. It's a very high-end technology, precision-oriented technology, a lot of value addition. Because हमारा बहुत सा foreign exchange है, तो इसमें इसको import करने में मिलता है. फिर sometimes it's not easy to import such a technology. And secondly, then when you talk about repair, after sales, all that. So अगर हम अपने मुल्क में बनाएं, it's going to be a lot cheaper. It will जो हमारा import exchequer है उसको भी सेव करेगा. हम उस लीग में खड़े होंगे. पाकिस्तान जो कि एयरक्राफ्ट engines बनाता है, जो कि high end technology develop कर रहा है. So I have these dreams for Pakistan. Inshallah. And I want to see this take off. And that's my vision for this country. And internationally I would want कि ये जो हमारी global warming हो रही है आसमान में, जैसे ज़मीन पे हो रही है due to many factors, आसमान में हो रही है इस एयरक्राफ्ट फ्लाइट की वजह से कि जो जहाज़ होते हैं और वो धुआं छोड़ते हैं, उससे पोल्यूशन भी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है और क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, जिसके असरात दुनिया पे आ रहे हैं. तो मैं चाहती हूँ, और चूँकि वो सब आसमान में बहुत दूर है, छुपा हुआ है, तो उस पर लोगों की इतनी तवज्जो नहीं है और एक इतनी स्पेशलाइज सी इंडस्ट्री है, नीश मार्केट है. तो दैट्स व्हाट आई वांट टू डू कि हम उसको भी कंट्रोल करें. एंड दैट्स अ बेनिफिट फॉर the entire world, for the planet, for all of us, जितने भी लोग हैं दुनिया में. Because जब आप I would say for the human race. For the human race, बिल्कुल. जैसे आप दुनिया में जब बात करते हैं, हम इधर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो हर रीजन की, हर खित्ते की अपनी प्रॉब्लम्स हैं. लेकिन जब हम आसमान, तो हम सबका कॉमन है. वहाँ पे अगर कोई भी ग्लोबल वार्मिंग या पोल्यूशन होती है, तो वो पूरी दुनिया पे उसके असर. और अब तो बाय ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो. बिल्कुल. डोमेस्टिक फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा. बिल्कुल, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है. This is how this is how the world is growing, and not flying is not an option. But we have to make flying sustainable. आप जो हमारी बहुत सी यंग जनरेशन जिसमें गर्ल्स हैं, उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे कि वो भी स्टेम फील्ड में आएँ? जी, मैं ये कहूँगी कि देखिए, सबसे पहली बात है कि आप अगर आपका इंटरेस्ट है, एक तो हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा ना, इसमें पैसा है, ये लड़कियों को करना चाहिए. हाँ, ये बहुत ज़्यादा. So you should identify yourself. पहली बात तो ये है कि आप अपने पैशन को, अपने टैलेंट को, अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें. If there's something that you want to do, then just go for it. Then you don't need, because you will only excel in something that you have a passion for, you have a talent for. जो आप ऐसे ही कर लेंगे किसी चीज़ की खातिर कि पैसा बनाने के लिए, या किसी ने कह दिया, या मार्केट में स्कोप है, तो उससे फिर बात नहीं बनेगी. जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा. बिकॉज जब आप कोई चीज़ पैशन से करते हो ना, तो फिर सर्कमस्टांसेस कितने भी चैलेंजिंग हो, यू नेविगेट थ्रू देम. अगर पैशन नहीं होता तो फिर वो चीज़ साइड पे. और ये भी बिल्कुल नहीं सोचें कि ये लड़कियों की फील्ड है, लड़कों की फील्ड है. बिल्कुल. और शादी के बाद हम इसको
कैरी ऑन नहीं कर सकते। अगर आपकी माशाल्लाह आपकी बेटी भी है, आपकी एक अपनी फैमिली है, आप उसको भी लुक आफ्टर कर रही हैं, अपनी कंपनी को भी कर रही हैं, आपने पीएचडी भी की है और बाहर अपनी प्रोडक्ट के लिए आप ट्रैवल भी करती हैं। जी सो ये सब चीज़ें हैंडल कर रही हैं, इसका मतलब है कि आप एक खातून इतना सब कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती है। और अब तो देखिए इतनी कनेक्टिविटी आ गई है इंटरनेट की वजह से, जूम की वजह से, अब इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे हैं। मतलब जैसे कोविड में बहुत से मुल्कों में कोई कॉन्फ्रेंस होती थी, वो मुझे एज अ की नोट जूम पे मैं दे देती थी। अब हमारी पाकिस्तानी कंपनी है, बट आई थिंक एवरीबडी जो लोग इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता है कि ये दिस कंपनी इज़ वर्किंग ऑन दिस, बिकॉज इस तरह की टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, this is the only company in the world that is working on it, and it is a Pakistani company. So it's not that being in Pakistan, in obviously yes, जो आपके challenges हैं policies के, ecosystem के, they are there, but every country has different challenges, every environment will have their challenges, pros and cons, but yes, you can do it, and I think हम अगर अपना जो भी एक्स्ट्रा टाइम है, जो भी है, जो हमें भी जो भी स्पेस अलाउ होती है, उसको हम कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं और जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है उसको परस्यू कर सकते हैं. It's important for yourself also, because again you have a mind, you have a brain, उसको इस्तेमाल तो करना ना. If you don't use it तो क्या होगा, तो खराब हो जाएगा. खराब हो जाएगा, वैसे का वैसे ही रह वैसे कभी वही. तो जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी को कहते हैं जो भी चीज़ें आप अपने मसल्स को यूज़ करें वो हेल्दी रहते हैं, जिस चीज़ को आप यूज़ करें. तो अगर अल्लाह ताला ने जहन दिया है, अगर वो साइंस की तरफ है, वो मैथ्स की तरफ है, वो कोई किसी भी फील्ड में एप्टीट्यूड है, टीचिंग का, सो यू शुड, बेकिंग का एप्टीट्यूड है, यू शुड यूज़ इट. And try. अच्छा, आपको तो बहुत ऑफर्स भी होती होंगी कि ये हमारी कंट्री में आके इसके ऊपर काम करें. जी बिल्कुल होती हैं, और ये भी होती हैं, मैं कहीं प्रेजेंट करती हूँ तो वो कहते हैं आप हमारे पास आ जाए. तो क्या हमारी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है इसमें? आई होप कि करे. इंशाल्लाह आप दुआ करें कि मुझे वो सपोर्ट मिले जो कि इस तरह के काम को एक गवर्नमेंट को करनी चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरी दुनिया अचीवमेंट है, और ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से दुनिया में जाएगी तो उसका एक और इम्पैक्ट है कि पाकिस्तान, स्पेशली जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज़ की कोई कंट्रीब्यूशन है और वो कुछ एक्शंस ले रहे हैं टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज. सो इफ पाकिस्तान सेज दैट लाइक climate change in the sky because of aviation is a very high-end game, I would say. और अगर पाकिस्तान कहे कि पाकिस्तान is making a contribution to reduce global warming because of aviation in the sky and bring some positive impact on climate change in the world, it would be an amazing achievement. Even just launching this initiative. बाकी तो फिर ठीक है, उसमें challenges हैं, hurdles हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं. Obviously पूरी कोशिश होती है, बट इसको एक मैक्रो लेवल पे टेकअप करना, I think it's something it would be huge for the country. हमें उम्मीद है, आई होप कि हमारी गवर्नमेंट भी स्टेबल हो जाए और वो इस तरफ भी देखे कि बिल्कुल, बिकॉज हम तो यही अब हम अगर अपने तौर पे एज अ प्राइवेट एंटिटी हम उसको कर रहे हैं, बट obviously as a smaller entity with limited resources, it gets very challenging at times. थैंक यू सो वेरी मच सारा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आपकी जो ये यूनिक सी फील्ड है इसके बारे में हमने बहुत सी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपसे सुनी, और आई होप कि जो बच्चियाँ अभी पढ़ रही हैं और उनको ये शौक़ है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएं, वो डेफिनेटली अब पूरे कॉन्फिडेंस से जाएंगी. थैंक यू सो मच. You're welcome.